हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले द गिवन नंबर इज अ Armstrong number or not. Okay, so basically what is the Armstrong number? Let's firstly understand. Okay, so I just created a one class. Inside that I'm creating one main method first. Okay, so first I will show you what is the Armstrong number. I'm giving you one example. In yeah, you can see. For example, let's consider the number 153. Okay, so basically this is the Armstrong number. Why we are considering this is the Armstrong number? Because when we do addition of all these, when we raise the power of this number and we add all this number, then this exact digit will be formed. Okay, so let's see. We just splitted this number, and when we raise to the power 3, and when the second number also we did the same for all the number. So what will happen when we raise to the power of 3 of 1, it will be output will be 1. So similar for the 5, it will be 125, and for the 3 is a 27. So for the end output is 153. So this is the basically this is the Armstrong number. Okay, so apart from that, there are so many numbers. So you can consider like a 3, say 1 also Armstrong number. You can find out anything. So we just need to write the logic, or like we have to write the logic so it can find this is the Armstrong number or not. Okay, so basically हम start करते हैं, इसको हम erase कर देते हैं. सो जब हमें स्टार्ट करना है लाइक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए, तो बेसिकली हमें पहले तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर लेना पड़ेगा. आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हम लेते हैं, बेसिकली अभी मैंने बताया आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर 153 है, तो एक नंबर ले लिया. तो बेसिकली इस नंबर को हमें किसी और नंबर में भी स्टोर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि एट देन हमें ये नंबर को भी कंपेयर करना है. ठीक है, तो उसी के लिए हम एक ओरिजिनल नंबर करके ओरिजिनल नंबर. ओके, ओरिजिनल. ओके, ठीक है. सो इसके अंदर हम क्या कर रीइनिशलाइज करेंगे इस नंबर को. क्यों कर रहे हैं? ताकि ये नंबर इसके अंदर होगा तो इसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी ऑपरेशन हमें करना है. ठीक है, तो और हमें 2 वेरिएबल चाहिए, तो हम डिक्लेयर कर रहे हैं लाइक रिमाइंडर एक चाहिए हमें, रिमाइंडर एक चाहिए और एक रिजल्ट वेरिएबल चाहिए. ये 2 वेरिएबल हम क्यों ले रहे हैं? तो बेसिकली व्हाई वी आर टेकिंग दिस, I will tell you. Okay, so we just initializing 0 0 for now. When we are using that time, I will tell you why we are using. So after that, we took a one number like 153. So we need to check that number is a palindrome or not. So we are just initialize this number into original num as well. So we are using this original num, and we are using while loop. Okay, so I know basically you know why we are using, because we don't need to declare starting point and ending point and initialization in while loop, and it is a short but sweet loop to use. Okay, so basically we are using this, and we are checking the original number is not equal to 0. Okay, so if it is equal to 0, then this while loop will be get terminated. Okay, so inside that we have to write the logic. How we can write the logic? We have to use the reminder. So we are using this reminder, and inside that actually we need to find the remainder. How we can get the remainder? So we have to divide, correct? So when we divide, we will get the output, but we will don't get the remainder. For the remainder purpose, we have to use percentage symbol. So when we use a percentage, we will get the remainder. Okay, whatever the remainder will be available. So exactly. So after that, we need to take the results variable, and we have to use result equal to result plus
here we need to do math.pow. Okay, so when we use, it's not like that we have to use, but you should use for the more accuracy reminder and 3. Okay, so basically what he is suggesting we have to do. After that, why it's giving me an error? Because when we see it's provided double, but it's required in stochast impression to int. Okay, so we are just casting from the double to int. Okay, it's not a big deal for you guys. So we are taking original num. Now here we just taken a reminder, but we have not removed that last character. Okay, so basically there is a 153 after what, after getting reminder it will be available only 15. Okay, so but we have to remove this last 3 permanently. So for that we have to do the last step, that is what, original num equal to original num divided by 10. Okay, so instead of writing this all these things in double, we should mitigate all these things. How? We can remove this and we can do like this. Okay, so this is the shortest way. So I think this is the logic for the finding Armstrong number. Basically हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक नंबर ले रहे, उसमें से वो नंबर 0 के कंपैरिजन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो भी नंबर है, और उसके बाद इस नंबर को हम स्टार्टिंग में 153 नंबर होगा, ठीक है, उसके बाद इससे क्या होगा, ये नंबर यहाँ जाएगा, 0 के कंपैरिजन में नहीं है, तो इसके अंदर लूप के अंदर चला जाएगा, इसके अंदर जाने के बाद ये रिमाइंडर फाइंड करेगा, तो रिमाइंडर इसको मिलेगा 3, तो ये 3 रिमाइंडर लेके यहाँ पे वो इस रिजल्ट के अंदर स्टोर कर देगा। बेसिकली इसका जो हमें आगे 3 की पावर निकाल रहे हैं, करेक्ट, उसकी सो आप मल्टीप्लाई भी 3 टाइम्स ऐसा कर सकते थे, ठीक है। सो इतना करने के बाद वो रिजल्ट में स्टोर करेगा, उसके बाद हमें ये 3 को परमानेंटली रिमूव भी करना है, तो 3 को रिमूव करने के लिए हम ओरिजिनल नंबर को डिवाइडेड बाय 10 कर रहे हैं, तो उसके बाद ओरिजिनल नंबर में वैल्यू वो 3 चले जाने के बाद 15 होगी, सिमिलर उसके बाद 5 चला जाएगा, उसके बाद उसका भी पावर होके रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, फिर 1 का होगा, ऐसा कर करके सारे के सारे रिजल्ट स्टोर होगा और उनके एडिशन वगैरह इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। सो बेसिकली ये स्टोर होने के बाद हमें क्या करना है, इसको चेक, एक इफ कंडीशन लगेगी, उसके अंदर हम चेक कर रहे हैं रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर और नॉट, अगर है इक्वल टू, तो हमारा ये रिजल्ट वाला आउटपुट और नंबर वाला आउटपुट अगर सेम है तो हम इसे कह सकते हैं ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ओके, सो वी कैन टेक द नंबर एंड से is an Armstrong number. Okay, so for that we need to take this is an Armstrong number. Okay, so or else is not an Armstrong number, is an Armstrong, else we are just copy pasting the is not an Armstrong number. Okay, so basically our program is ready to launch. Okay, so right now I will tell you again, just I'm running the code. Now you can see the output is 153 is an Armstrong number. So basically we are not given here space, due to that it look like concatenation is done. Okay, so I hope आपको अंडरस्टैंड होगा कैसे हम एक कर रहे हैं। आप और भी सारे नंबर यहाँ पे चेंज करके देख सकते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं, ठीक है। सो लॉजिक आपको समझ में आ ही चुका होगा। अगर आपको किसी भी स्टेप पे आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आएगा पहली बार में तो आप समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो परसेंटेज हम कम यूज़ कर रहे हैं, या हम इस सिंबल ये हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस में देख लेंगे, हम
एग्जैक्ट इनमें का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो उसके ऊपर वीडियो आने वाला है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट